Hmm. Okay, so let's start the class. Okay, Madiha and Adil. So let's start the class. It's almost, we have waited a lot. Okay, so let's start the class. So basically, what is a quadratic equation? Adil and Madiha, can you tell me? Both of you, can anybody tell me what is class? Basically, a quadratic The equation? equation with three variables. No, an equation in which the degree of the equation is 2. Quadratic means the highest power should be 2, na? Adil, Madiha? Yes, sir. I am saying that quadratic equation में highest power क्या होती है? Uh, two. 2 होती है ना? So what you will say is that an equation in which the highest power of a variable is 2. ठीक है? Okay. So that is the ax square plus. Madiha, is this clear to you, dear? 0. ठीक है? So this is the standard equation of the standard equation of quadratic equation. ठीक है? So this is very similar to polynomial that we have covered in the last class. Okay, so as similar to the polynomials, we in the polynomials we had zeros of the polynomial, but in the equations we have roots of the equation. Okay, so two roots there are. ठीक है, first one is
सो इक्वेशन के टू रूट्स होते हैं, तो अब इसका जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, इन सिमिलर टू दी पॉलिनॉमियल्स, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, ठीक है, क्लियर? आदिल एंड मदीहा, प्लीज लेट मी नो एटलीस्ट यार। Yes, sir. Madiha, are you there? Are you attending the class? Okay, so I'm not getting any response from Diha. So let's move forward. Sir, some of them are still writing the exam of today. Which exam, dear? So maths, circles, surface area and volume, that lessons. So you are having right now exam. No, sir, I finished it early. So कितने बजे से start हुआ था आदिल? कितने 1.5 So hour का होगा, I think. yes, sir, I took 1.5 hour. चलो ठीक है, कोई नहीं, लेट्स बट स्टार्ट तो करना होगा ना। देखो ऑलमोस्ट यार वी हैव only 1 hour to cover this chapter and it's almost 15 minutes has been wasted for the Yes, sir. like waiting of the students. So let's start it. Okay, so this is the relation between the sum of the zero, sum of the roots and the product of the roots, similar to the polynomials part. ठीक है, Yes, Abdullah has joined. ठीक है, next is nature of roots. Nature of roots, basically nature of roots depends on the discriminant. Nature of roots means whether the roots are equal, real or not equal. ठीक है, वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, कहाँ थे आप? सर वो टेस्ट लिख रहा था मैं, तो मैंने Learnivio अच्छा को बता दिया था कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सो ठीक है, सो सो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, बेसिक्स मैंने बताया था अब्दुल्ला, बस स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। और इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दैट इज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा को हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। So, and nature of roots. Nature of roots basically depend on the discriminant, and discriminant is what? So, discriminant defines whether the equation is, whether the roots are real or not. So, discriminant को d से denote करते हैं, that is b square minus 4ac. Clear? दो तीन केसेस होते हैं इसमें। फर्स्ट केस इज d is greater than 0. So, d greater than 0 means roots are real and, बताओ रूट्स रियल होते हैं और क्या होते हैं ये ग्रेटर देन 0 में? Equals. Equal. श्योर? Roots are equal and distinct. Distinct मतलब different. They are not equal. Equal होते हैं in the case when discriminant is equals to 0. ठीक है, are real and equal. ठीक है, third case is d is less than 0. अब बताओ इसमें क्या होता है? मरीहा, Abdullah and Adil, please let me know, roots are real or not real and Sir, equal, क्या होता है? no real roots. No real roots by Abdullah Sahab. What about rest of you? Sir, not real roots. Okay. So no real roots will be there. Very good. So अभी
ये जो है अभी नो रियल रूट्स का तो आपका कॉन्सेप्ट अभी तक है कि जब आप व्हेन यू विल गो इन द 11th क्लास ना एंड विल टेक मैथ्स, तो एक चैप्टर आएगा फॉर 11th क्लास में ही, 5th चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरा इमेजिनरी रूट्स के ऊपर बेस्ड है। जब आपके रूट्स इक्वल नहीं होंगे, मतलब बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस देन होगा, तो दिस एक ही केस के ऊपर पूरा एक चैप्टर बेस्ड है, पता है आप लोगों को। सो हाँ, एक चीज और थी कि आपके दो मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। फैक्टराइजेशन, होते तो तीन थे बेसिकली बट एक डिलीटेड है राइट नाउ, सो अभी हम दो ही पढ़ेंगे, दैट इज फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला। और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी था जो वो डिलीट हो डिलीट हो गया अब्दुल्ला। हाँ हाँ वही मतलब बता रहा हाँ, हूँ। सो बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है एवरीबॉडी, यस और नो, मदीहा, आदिल एंड अब्दुल्ला, इज इट क्लियर? यस श्योर? सर अच्छा ठीक है चलो, सो लेट्स डू वन क्वेश्चन। सो देखो इस चैप्टर में थ्योरी बहुत कम है, वेरी लेस थ्योरी इज देयर बिकॉज दिस इज वेरी रिलेटेड टू पॉलिनॉमियल। So this part is very related to polynomial. Only the new part that is present in quadratic equation is this nature of roots. Clear everybody, yes or no? सर एक से नोट डाउन कर रहा हूँ। नोट डाउन नहीं करो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्लास में वैसे ही बहुत टाइम कम होता है ना इसमें, रिवीजन क्लास में। ओके सो लेट्स डू वन क्वेश्चन। Okay, so let's do this basic question first. So this question is basically, so the roots of the quadratic equation are, as basically we have to find which one is correct pair. Okay, so 2x square minus is equals to 0. So या तो आप quadratic formula यूज कर लो या फिर middle term split, that is factorization. So factorization how that follows? So factorization में क्या होता है, AC का आपको प्रोडक्ट लेना होता है। AC is what, यहाँ पे 12 आ गया आपका AC, 6 into 12. So you have to take the LCM of 12, 6 and 3, and आपको इसमें पेयरिंग इस तरीके से करनी होती है ताकि आपका मिडिल टर्म आ जाए। क्लियर? यस और नो एवरीबॉडी? बोलो, मिडिल टर्म स्प्लिट किस किस को पता है? ओके आदिल, ओके ओके आदिल, नो वरीज डियर, नो वरीज। व्हाट अबाउट मदीहा एंड अब्दुल्ला? यस ये आपको मिडिल टर्म स्प्लिट पता है मदीहा आपको? यस सर बी ऑनेस्ट विद मी डियर, इफ यू डोंट नो आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी अबाउट इट, बट एटलीस्ट आई शुड हैव द आइडिया कि आपको मालूम है या नहीं। यस सर पता है पता है, चलो ठीक है। So you see this thing that you have, देखो pairing, you have to do the pairing in such a manner that when you multiply you should get the product of AC, when you add or subtract you should get the middle term. तो देखो यहाँ पे आपके दो पेयर बन जाएंगे 4 और 3 के, 4 2 2 4 and 3. So यहाँ पे माइनस ऑफ x चाहिए तो 4 will be in the negative part, माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3x, तो नेगेटिव x बचेगा ना मिडिल टर्म में, minus of 6 is equals to 0. Take the common 2x is common, x minus 2 will be left, and x minus 2 in this pair also will be equals to 0. So plus 3 will be taken common out. So you can see this thing that if x minus 2 is common and 2x plus 3. So these are the two factors of this equation. So basically x will be equals to 2 or x is equals to minus
3 by 2. So 2 positive and minus 3 by 2, B is the correct option. Clear? Everybody, yes or no? Please let me know, dear. Yes, sir. Any doubt? देखो थोड़ा जो है ना मेरे साथ इंटरेक्टिव रहो एवरीबडी, क्योंकि you already know this thing that we have only 1 hour for the revision of this chapter. So if I continuously ask that it is clear or not, so and if you don't respond, like I'm saying this to everybody, so most of the time will be wasted in this process. So if you got it in one go, just say yes. If not, say no. So that's what I wanted. Okay, so let's do one more question. Okay, so so this is the another question that we can be okay. So we have to solve for the x, okay, and the method is not mentioned. It means that we can use the quadratic formula as well as the factorization. So we can use any of the method depending on the complexity of the question. If we get the middle term without any doing any complex calculation, we can use the middle term, or else we can use the quadratic formula. Clear? Yes, sir. Any doubt? Okay, so that is 1 by x minus 3 plus of, no, sorry, negative of 1 by x of x plus 5 is equals to 1 by 6. So first, right hand pay, what we can do, we can take the LCM. So LCM is nothing but, so by taking LCM, dividing the LCM by x minus 3, you will get x plus 5. Just multiply this one, x plus 5 minus of, if you are dividing the LCM by x plus 5, you will get the x minus 3 on the right hand side. On this side, 1 by and 1 by 6 on the right hand side. So opening the bracket, you will get x plus 5 minus of x plus of 3 divided by x minus 3 into x plus 5 is equals to 1 by 6. So this x will get cancelled, 8 will be there. So just cross multiply them. 8 into 6 is equals to x square, or you can take x minus 3, x plus 5 is equals to 8 6 is 48 is equals to x square minus plus 5 plus 2x minus 15. ठीक है, taking all the terms on one side, so x square पॉजिटिव साइड ही रखते हैं, 48 को नेगेटिव राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, minus 15 minus 48 is equals to 0. 48 5 53 and 63. So x square plus of 2x minus of 63. So you can see 63. So you can see this thing is that 63 is there. So if you take the 63 can be, you can say factorized into 7 and 9. So x square plus of 9x, because 2x is positive, minus of 7x minus of 63 is equals to 0. Clear? So taking x as common, x plus 9 will be left and x plus 9 will be left here. So what you need to take common? Minus of 7x, because minus of 7x into minus of 7x into minus 9, 7x, 7 into 9, it would be minus 63. Clear? So it would be x plus 9 into
x minus 7 is equals to 0. So what will be the value of x? It would be minus of 9, or x will be equals to 7. Clear? Clear? Yes or no? Please let me know, everybody. Yes. Any doubt? No. Sir. Sure. Yes. ठीक है. Okay, let's do one more question. I'm giving you one question to solve it. Adil, Abdullah and Madiha, please solve this question. सर एक लाइन ऊपर कर दीजिए. हाँ लो. हाँ. ठीक है. बराबर. Any answer from Abdullah and Adil and Madiha? Done?
Let's solve it together. 4 root 3 x square plus of 5x minus 2 root 3 is equals to 0. ठीक है, so you have to split. देखो अब a और c का multiplication लो. So 4 2s are 8 and root 3 into root 3 will be 3. So 8 3s are 24. So a into c is equals to 24. So you have to split the 24 in such a manner that multiplying you should get 24 and adding or subtracting you should get the middle term, that is 5. ठीक है, so simple दिख रहा है. 8 3 is 24 है, तो 8 में से 3 subtract करेंगे, you will get 5. Yes or no? Yes, sir. So 4 root 3 x square plus of 8x, because 5x is positive, minus of 3x minus of 2 root 3 is equals to 0. ठीक है, take 4x common. So what that is left is root 3x plus of 2. ठीक है, inside same here for root 3 x plus of 2 is equals to 0. So negative of root 3 will be taken common out, because root 3 into root 3 will be 3 and negative of 3x minus root 2 root 3. ठीक है everybody? So root 3 x plus 2 into 4x minus root 3 is equals to 0. So x will be equals to minus of 2 root 3 or x will be equals to root 3 by 4. देखो इसको basically rationalize कर लेते हैं. So that is root 3 into root 3 is equals to minus of 2 root 3 by 3. So these are the two values. Clear everybody, yes or no? Abdullah, Madiha and Adil, please let me know. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Okay, that's great. Okay, so let me give you one more question. Okay, कुछ word problems solve करते हैं, ठीक है? Solve this one. Okay, let's solve it together. Solve this together. So, okay, ठीक है. So next वाला question आप लोग solve करना, मैं आपको solve करके दिखाता हूँ. देखो, if the sum of two natural number is 8, ठीक है, and the product is 15, ठीक है, and the find the numbers. Basically, if you see this thing, that if you take the two numbers, suppose that sum of those two number is 8. So assume that let x be a number. देखो, let x and another number would be 8 minus x, yes or no? Because if you are taking that x is one number, so another number will be 8 minus x, because देखो 8 plus 8 minus x, you will get 8 ना. Sum 8 है दोनों numbers का, yes or no everybody? Oh, these are numbers
respectively. So this question is saying that the product is 15. So x into 8 minus x will be equals to 15. Clear? So 8x minus x square is equals to 15. So taking all the variables on one side, so x is negative, so I'm taking on the right hand side to get it positive. Minus of x plus of 15 is equals to 0. Clear, yes or no? Yes. Okay, so you have to basically split this middle term to get 8, and when you multiply it, you should get 15. So 15 into 1 is basically 15. You can see this thing. If you take this 8 as 5 plus 3 minus of 5x minus of 3x plus of 15. So see this thing, multiply 5 into 3, it would be positive. Oh, sorry, it would be 15. Yes or no? So x taken out common. So x minus 5, and same here, x minus 5 is equals to 0. So what is left? So minus of 3x and positive of 15. So the terms that will be present is x minus 5 and x minus 3 is equals to 0. So x will be equals to 5 or x will be equals to 3. So so आपके दोनों factors हो सकते हैं. If x is equals to 5, then 8 minus x will be equals to 8 minus 5 is equals to 3. So 5 and 3, या फिर और x is equals to 3, and 8 minus x will be equals to 8 minus 3, that is equals to 5. Yes or no, everybody, please let me know. Yes or no? Abdullah, Adil, and Madiha, please let me know, bacha. No answer from anybody. Yes, I sir. Yes, don't sir. know why this batch is very okay. हाँ सर, वही है वो। सर मैथ, देखो मैंने कहा तो मैथ्स में बिना कुछ इतनी कैलकुलेशन की जरूरत रहती है, आदमी ऐसे सोच के देख ले आंसर मिल जाता है। बिल्कुल जी अब्दुल्ला साहब, आपके तो क्या ही कहने, नहीं आपकी नहीं तो सर, बात ही निराली नहीं है. सुनो सुनो सुनो, मैं सरकाज़म में नहीं बोल रहा हूँ। मतलब आई डोंट नो व्हाई मैथ्स क्यों इतना वो घुमा फिरा के एक ही सिंपल सी चीज को इतना घुमाएंगे फिराएंगे, फिर आंसर निकालेंगे। अब जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ना कि 3 and 15 है, 3 + 5 = 8 और 3 × 5 जी = जी 15। जी जी बिल्कुल. अरे देखो, अभी आपको इसी क्वेश्चन में तो लग रहा है ना, बट दूसरे क्वेश्चंस में तो नहीं लग सकता ना आपको. मेथड यही रहेगा, बट तो नंबर्स जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशन होगा वो अलग होगा ना. ठीक है. सो सर देखो जी, ये क्वेश्चन है, लेट मी चेक सर किसने मैं नोट ज्वाइन डाउन किया. करा था, थोड़ा सा ऊपर कर लो तो 1 सेकंड बस। ठीक है चलो. दिल्ली सो ये क्वेश्चन है, 2019। ये रिसेंट का ही क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल. So okay, let's do this question. देखो, two taps are there, ठीक है, which can fill a tank in this time. Basically when they are open together, they can fill a tank in this time. So the tap with longer diameter, basically जिसका diameter बड़ा है, taps होती है ना दो, जिनकी जो diameter basically जो point होता है जहां से वो water flow करता है, that is bigger. So वो that takes individually 2 hours less than the tap with smaller one to fill the tank.
यानी कि सपोज करो कि एक मीडियम टैंक है और एक बड़ी वाली टैंक मतलब टैप है। सो एक का डायमीटर काफी बड़ा है, दैट इज सपोज लाइक दिस। इसका डायमीटर, एक का डायमीटर इतना सा चुन्नू सा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाली ज्यादा टाइम लेगी एंड ये वाली कम टाइम लेगी। सो इंडिविजुअली हमें कैलकुलेट करना है कि हर एक टैप कितना टाइम लेगी, ठीक है। सो लेट्स फाइंड इट। देखो सपोज करो लेट x hours be taken by smaller tap, ठीक है। स्मॉलर टैप ने x hours लिए टू फिल द टैंक, ठीक है। हमें टाइम ही तो निकालना है ना, आवर कितना टाइम लगा ईच टैप में टू फिल द, यस और नो, जल्दी से बताओ। बोलो। Abdullah and Madiha. Adil, I can understand that you have voice issue, so no worries. So Adil, oh sorry, Abdullah and Madiha, please let me know, dear. Sir, my voice will not come because my net is lagging a lot. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कोई नहीं बच्चे, चैट में आप बता देना, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई बात Okay, नहीं, नो sir. वरीज डियर, नो वरी। So अगर if your x hours has been taken by the smaller tank to fill, smaller tap to fill the tank, तो x hours is taking to fill the tank. So sorry, so 1 hour में कितना टैंक फिल होगा? 1 hour में 1/x टैंक फिल होगा, यस और नो? Yes. So in 1 hour it will be filled 1/x, yes or no? Or if you take bigger tap, so in 1 hour it would be 1/x minus 2 because it is taking less than 2 hour ना। अगर टोटली टैंक फुल हो रहा है इन x minus 2 hours, और 1 hour में कितना फिल होगा? 1/x minus 2। अब्दुल्ला एंड मदीहा एंड आदिल, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, सो देखो अब इनको ऐड करो और टोटल टाइम देखो 8 बाय ये होगा आपका। इफ यू ऐड दिस थिंग इन लाइक, देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं। जो आपका 1 वाला पार्ट होता है 1 + 7/8, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो ये आपका आ जाएगा 15/8। 8 + 8 7 15 एंड बाई 8। सो यहाँ पे हम 1 hour की कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर टोटल आवर में देखो 15/8 टाइम्स में टोटल टैंक भर रहा है, ठीक है। तो 1 hour में कितना बढ़ेगा? 8/15, यस और नो? Yes or no? सर 1 hour is equal to 1/x and 1 hour is equal to 1/x minus 2. ये बिगर टैप है। सब जस्ट Okay, अ okay. सेकेंड, लेट मी राइट इट इन दिस प्रॉपर मैनर। टाइम टेकन, sorry, tank filled by smaller tap। सर आज तो ज़्यादा ठंडी नहीं है ना दिल्ली में? हाँ आज नहीं है, बट स्टिल हाँ, इट्स 9 डिग्री सेल्सियस। 9? अच्छा मुझे तो 12 दिखा रहा है। सो स्टिल 9 है अभी भी इन 1 hour by
larger tab will be equals to 1 by x minus 2. Clear? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. Tank filled by both taps in 1 hour. It is 8 by 15. क्योंकि 15 by 8 आवर्स में तो ये पूरा टैंक फिल हो रहा है ना. तो अगर 1 आवर में कितना होगा? 8 by 15. ओके. सो अब ये टाइम है आपका t1, दैट इज टाइम t2. अगर आप इन दोनों को ऐड करो, ये इसके इक्वल है, यस और नो? बिकॉज दोनों को एक साथ जब फिल कर रहे हैं तो बोलो. तो सपोज दिस इज t1, दिस इज t2, यस और नो? ठीक है. तो t1 प्लस t2 इफ यू आर टेकिंग, अगर आप दोनों का टाइम ले लोगे, सो 1 आवर में जो होगा दैट वुड बी 8 by 15. Clear? So just put the times here. That is 1 by x plus of 1 by x minus 2 is equals to 8 by 15. So x into, take the LCM, x into x minus 2. So it is x minus 2 plus of x is equals to 8 by 15. So add them up. So 2x minus 2 divided by x minus 2 is equals to 8 by 15. ठीक है. So take 2 common from the numerator. X minus 1 will be equals to 8. Is equals to, oh sorry, 8 by 15. So this will get cancel this 8 by 4 times, yes or no? Cross multiply them. 15 into x minus 1 is equals to 4x into x minus 2. Okay. So it is 15x minus of 15 is equals to 4x square minus 8x. Okay. Take all the variables on the one side, all the terms. 4x square minus of 8x minus of 15x or minus of 15 is equals to 0. So 4x square minus of 23x minus of 15 is equals to 0. Clear? So you have to split this 23, oh sorry, 50, 60, 15 into 4 is 60. 15 into 4 is equals to 60, 60. So you have to split this 60 in such a manner that you should basically you should get the middle term while by adding or subtracting or by multiplying you should get 60. So directly देखो दिख रहा है, sorry, 4x square minus of 20x you can take and minus of 3. 20 into 3 is 60 and add them up 23 you will get is equals to 0. 4x x minus 5 x minus 5 is equals to 0 and minus 3 will be common. Sorry, plus 3. Just a second, here positive over 15 because 15 was on the negative side na, so it will be get positive.
ठीक है, clear everybody? So 4x plus 3 and x minus 5 is equals to 0. So the value of x can be equals to x minus x will be equals to 5, or x will be equals to minus 3 by 4. Sorry, just a second. Negative. Yes or no, everybody? Please let me know. Is this clear to you? So you can see this thing. If you take 3 by 4, so your x minus 2 will be negative. So that's why this one is discarded. And this one will be taken. So x minus 5 is the smaller tap, will take 5 hours. And larger tap will take 3 hours. So how, just a second, 3 hours कैसे है? X minus 2 is equals to 5 minus of 2, that is 3 hours. Clear? This is the answer. Please let me know, everybody. Is this clear to you or not? Abdullah, Madiha, and Adil, please let me know in the chat if you are not able to speak. Is this clear or not? Sir, Madiha is not even in the class. Okay. And अच्छा, उनका she, नेट इशू होगा शायद से. आप बताओ. अब्दुल, आदिल ने बता दिया. अब्दुल, आपको क्लियर हुआ ये? sir, थोड़ा सा complicated है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तो देखो बच्चे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ज्यादातर कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है. देखो सर आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है हम लोगों से ज्यादा. अच्छा, आपको तो मुझे आपको तो एक्सपीरियंस है. इजी वाह, लगेगा क्या ना. बात है. आप AI/ML कर रहे हैं, हम लोग अभी 10th अच्छा में. अच्छा अच्छा. मैं आ सो रहा हूँ, ठीक क्लियर है, एवरीबडी? हाँ अब्दुल्ला, कुछ कह रहे हो आप? मैं आ रहा हूँ 1 मिनट बस. अच्छा ठीक है.